हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड का जो मार्केट है बहुत ही ओवर वैल्यू हो गया है। तो इस ओवर वैल्यू मार्केट में हम इन्वेस्ट कैसे करें। हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत कम अमाउंट होता है और ऊपर से अभी शेयर्स की प्राइस इतनी हाई हो गई है कि सब इन्वेस्टर सोच में पड़ जाते हैं कि वो इन्वेस्ट कहाँ करें। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट विद हाई स्टॉक प्राइस। तो इस मामले में वॉरेन बफेट ने क्या किया है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखते हैं वॉरेन बफेट ने क्या कहा है इसके बारे में। He says, if you deem stock prices to be overvalued or in a bubble, do you think it's best to keep your money in cash while waiting for prices to come down to a fair price? Or would it be a better idea to invest this money in some way while waiting until stock prices are fair again and then sell the investment to buy the stock? Well, Charlie and I have had that discussion on a lot of things. We bought some stocks we really don't know that much about, but I'm not really comfortable doing that. You're used to shooting fish in a barrel, but that's gotten harder. Yeah, we've got probably 10 to 15% of our total assets in cash beyond what I would like to have, just as a way of protecting the owners and the people that are our partners from ever having us ever get in a pickle. You know, we really run Berkshire to make sure that we don't want to lose other people's money who stick with us for years. We can't help what somebody does that buys it today and sells it tomorrow. But we've got a real gene that pushes us in that direction. But we've got more than we've got probably 70 or 80 billion, something like that maybe, that we'd love to put to work. But that's 10% of our assets roughly, and we probably won't get a chance to do it under these conditions. But conditions change very, very, very rapidly sometimes in markets, and we do have people that would like to join us, but the market option they have is just too great for them. And if they're publicly traded, I mean, they basically can't. They would have great difficulty, well, making a deal with us because somebody else would come along with using other people's money. It's, you know, we may be unhappy about the 70 billion, but we're very happy about the other 700 billion. So it's not like we should. तो यहाँ पे वॉरेन बफेट ने कहा है कि उनका जो मेन स्ट्रैटेजी है, जो उनका मेन गेम प्लान है स्टॉक मार्केट में, वो है कि अंडर वैल्यू शेयर्स को ढूंढना। वॉरेन बफेट ने बेंजामिन ग्राम्स की जो बुक है, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर थे जब वो 19 साल के थे, उनके बुक से भी ये टॉपिक जो पिक किया है। ऐसे स्टॉक ढूंढना जो कि उनकी इनिशियल वैल्यू से कम है, और ऐसे चीप प्राइस के स्टॉक को ढूंढना, और ऐसी जो डील्स है। वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी इस टाइम की बहुत ही यूनिक है दोस्तों। उनके पास इतना पैसा है, उनके पास $138 बिलियन है। वो कौन सा भी स्टॉक खरीद सकते हैं, कौन सी भी बड़ी कंपनी के स्टॉक्स खरीद सकते हैं। फिर वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और अपने जो वैल्यू है उसे बचा के वो ऐसे स्टॉक ढूंढते हैं जो कि बहुत प्रॉफिटेबल हो। वो वेट करते हैं कि कब स्टॉक मार्केट की प्राइस है जो फेयर प्राइस को आ जाए, जो बड़े बड़े स्टॉक्स है अच्छी प्राइस में उनको मिले, और तब वो उनमें इन्वेस्ट करें। पर ये सारे जो बिज़नेस है वॉरेन बफेट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अभी बहुत ही स्काई हाई प्राइस को चले गए हैं। वो इतने ओवर वैल्यू हो गए हैं कि बफेट अब भी वेट करते हैं कि वो कब उनके बेस्ट प्राइस में आए। तो वो इन शेयर्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। वो अपने जो Just raise your hand and the monitor will supply the microphone. Thank you. Howard Winston from Cincinnati, Ohio. One question. Are you concerned about the rising valuations on the NASDAQ market where companies trade at multiples of revenues instead of multiples of earnings? The rising value of what did you say? The NASDAQ market. Where they trade at 10 times revenues or more, 30 times revenues instead of 10 times earnings. Yeah. Well, we don't pay much attention to that because throughout the careers Charlie and I have had in investing, there have always been hundreds of cases or thousands of cases of things that are ridiculously priced and phony stock promotions and the gullible being led into to believe in things that just can't come true. So that's always gone on and always will go on. And
it doesn't make any difference to us. I mean, we are not trying to predict markets. We never will try and predict markets. We're trying to find wonderful businesses, and the fact that a part of the market is kind of screwy, that's unimportant to us. We tried a few times shorting some of those things in our innocence of youth, and it's very tough to make money shorting even the obvious frauds, and there are some obvious frauds. It really is. It's not so tough to find the obvious frauds, and it's not tough to be right over 10 years. But it's very tough to make money being short them. Although we tried a few times way back. We don't look at indicia from stocks in general, or from PEs or price sales ratios, or what other things you're doing. We really just focus on businesses. We don't care if there's a stock market. I mean, would we want to own Coca-Cola? The 8% we own of Coca-Cola, the 11% Gillette. If they said we're just going to delist the stock and we're never going, we'll open it again in 20 years. It's fine with us, And then if it goes down on the news, we'll buy more of it. So we care about what the business does. Yeah. एक समय था जब मार्केट बहुत ही हाई प्राइस को ट्रेड कर रहा था। ये 2003 का जो समय था, उस समय मार्केट में शेयर्स की प्राइस जो थी वो बहुत हाई थी, स्टॉक की प्राइस जो होती बहुत हाई थी। वॉरेन बफेट का उस समय बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा था कि अच्छी डील्स ढूंढने के लिए। तो उन्होंने एक ट्रेजरी बॉन्ड बनाने चालू कर दिए, और उन्होंने इन ट्रेजरी बॉन्ड से बहुत ही अच्छा पैसा कमाया। 2007 में लगभग उन्होंने $45 बिलियन जो है वो कमाया उन्होंने। और फिर वो $45 बिलियन जो थे उन्होंने 2009 में जब मार्केट बहुत ही क्रैश हुआ था, बहुत ही मंदी आई थी और मार्केट बहुत ही चीप लेवल प्राइस को चला गया था, तब उन्होंने स्टॉक ऐसे पागल की तरह खरीदने चालू किए। उन्होंने अपने जो लगभग $45 बिलियन की जो अमाउंट उसमें से हाफ सब शेयर्स में डाल दिए, जो कि बहुत ही चीप और लो प्राइस को उनको मिल रहे थे। तो ऐसे उन्होंने बहुत ही बड़ी जो बाइंग है उस समय कर ली। तो ऐसे वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी वर्क करती है।